रिसेंटली आई ब्लैक होल की इमेज के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है वो चल रही है। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो भी बने हुए हैं इसके बारे में और आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ 3 ऐसे वैज्ञानिक जो ब्लैक होल की इस इमेज के बारे में बात करेंगे और ब्लैक होल के बारे में और इमेज के बारे में, दोनों के बारे में आप लोगों को बताएँगे। तो सबसे पहले जयंत मूर्ति सर से जान लेते हैं कि इस इमेज से, इस पूरे प्रोजेक्ट से हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं और क्या कुछ जो है वो एक इमेजिनरी लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। Let me not talk too much about the image itself. Of course, it's a spectacular picture. And I'm sure that as people study it, it'll tell us a lot about the black hole and about the surroundings of the black hole. But what fascinated me there was two things. One was the enthusiasm that the people talking had. You could see that they really enjoyed what they were doing, and they feel that what they were doing was important, and they wanted to get that excitement across to us who were watching it. So that was one part of it. The second part is that you see how long it took to release these results. As I understand it, and I could be wrong on this, the data from the black hole at the center of our galaxy was taken long ago, and as was the data for M87. But because it was more complicated, they talked a little bit about why, because of the variability of the source and so on. It's so much smaller than the one around M87 that it took them a long time to analyze it and to make sure that they were correct. And so it was an effort by a large group of people. They all put in this effort, and importantly, the funding agency, that is the NSF, they supported them throughout this time, even though they knew that the results would take so many years. They made sure that the team was kept together, that the team was funded throughout this. And I think that we as a nation and as a community have to learn this, that in order to do these really spectacular things, what can be more spectacular than the black hole at the center of our galaxy? In order to do these spectacular things, we have to have that sustained effort by the scientists and by the people who are funding the scientists. They have to have the freedom to spend the time on this, and they have to be supported in their effort to do this. I think that's very important. तो अब जानते हैं डॉक्टर प्रज्वल शास्त्री से कि जो M87 और अभी ये जो हमारा सैजिटेरियस ए की जो पिक्चर आई है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये आइंस्टाइन की थ्योरी को, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करती है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर प्रज्वल शास्त्री से इन सवालों के बारे में। अच्छा तो पहली बात यह है कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम बहुत सारे ब्लैक होल्स को जानते हैं सारे कहकशां में फैले हुए और शायद दूसरे गैलेक्सीज में भी so it's important to understand that the black holes we know all around Milky Way and probably strewn across other galaxies also, and these are the result of stellar death. तो ये सब सितारों से बने हुए ब्लैक होल्स हैं. But the black hole in the center of the Milky Way and in the center of our galaxies is different, not just because it is much more massive. It's called supermassive, मतलब more than 1,000,000 times the mass of our sun. तो हमारे सूरज के 10 लाख गुना वजन ज़्यादा है. 10 लाख से 1 अरब गुना तक हो सकता है. So but that's not the only difference between these black holes and the regular black holes. The other differences are they are always in the centers of galaxies, and their formation processes are likely very, very different. They are not formed from stars. तो ये अलग हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका वजन ज़्यादा है, लेकिन इस कारण से भी कि वो कहकशां के बीच और दूसरे गैलेक्सीज के बीच रहते हैं और ऑन टॉप ऑफ दैट इनके फॉर्मेशन जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का वो तारों से डायरेक्टली बने हुए हैं. So for this reason, these black holes are anyway special.
तो इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की खोज इज इवन मोर स्पेशल क्योंकि ये हमारे मिल्की वे की के बीच में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसका सिलुएट है. So it has a very sort of personal sense because it is our neck of the woods in the universe, which is very, very large. So हमारे गली में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, हमारे कॉस्मिक गली में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसका सिलुएट है, इसके लिए एक पर्सनल तरीके से, एक इमोशनल तरीके से स्पेशल है. लेकिन साइंटिफिकली ये स्पेशल है क्योंकि the evidence for supermassive black holes overall has been circumstantial. And the only supermassive black hole for which we thought of that there is direct evidence is the black hole at the center of the Milky Way, the Sagittarius A star black hole, through dynamics. So by looking at the stars and how fast they are moving around this black hole, it was determined directly that there was a black hole and its mass was 4 million solar masses. Then the second direct evidence for supermassive black holes was the Event Horizon Telescope discovery in Messier 87 in 2019 through the discovery of the silhouette. Lekin Messier 87 में it is very far away, and so we cannot, also it is very, very bright around the central black hole. So therefore we cannot see the individual stars. तो M87 के गैलेक्सी के बीच में जो सितारे हैं, मतलब एकदम बीच में, उनको हम देख नहीं पाते क्योंकि एक तो Messier 87 काफ़ी दूर है और दूसरा उसके इर्द गिर्द कुछ मटेरियल है और वो बहुत चमकदार है, तो इसलिए ये सितारे जो इतने चमकदार नहीं होते उनको देखना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है. तो इसलिए Messier 87 के बीच के सुपरमैसिव ब्लैक होल के एविडेंस सिर्फ ये तस्वीर से हुआ, सिर्फ ये सिलुएट जो हमको दिखाई दी उससे हुआ. लेकिन हमारे मिल्की वे के बीच में दो खोज, मतलब अलग अलग तरीके के जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों खोज के रिजल्ट एक ही निकला है. सो दिस इज वेरी स्पेशल. एक तरफ ये खोज था जो जिसको नोबेल प्राइज मिला 2020 में, जो सितारों को देख के वो कितने जल्दी घूमते हैं, ये बीच वाला पॉइंट के इर्द गिर्द कितने जल्दी घूमते हैं, उसके स्पीड को मेजर करके ये ब्लैक होल के मास का एस्टिमेट हुआ कि 4 मिलियन सोलर masses. So there would, and दूसरी तरफ ये जो अभी अभी आया रिजल्ट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का, उससे वो वही ब्लैक होल सिलुएट दिखाई दी हमें. तो ब्लैक होल्स डायरेक्टली नहीं देख पाते हम क्योंकि वो ब्लैक है, उससे रोशनी नहीं आता, लेकिन सिलुएट दिखाई देती है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो चमकदार मटेरियल है उसका रोशनी आता है और ब्लैक होल से नहीं आता है. तो ब्लैक होल वो रोशनी के बैकग्राउंड पे एक सिलुएट जैसा दिखता है हमें. So these two independent methods of studying the black hole have come together in the Milky Way, which is not possible in Messier 87. So that's why this is again very, very special, and the results are very, very consistent. The third reason I would say why this is special is because it is yet another evidence in support of Einstein's general theory, and it is telling us that the curvature of space-time behaves in the same way regardless of how much mass there is, regardless of what the environment there is, and so on. So for example, Messier 87 is a very, very big galaxy. It is a so-called elliptical galaxy, which means that all the stars are swarming around. Whereas the Milky Way is a different kind of galaxy. It's much less massive. Plus, it does have a swarming bunch of stars in the middle. Around it, there is this much flatter structure with the stars moving around in a sort of
disc-like structure, very flat. So it's a very, very different kind of galaxy from Messier 87. Yet, the central supermassive black holes, the curvature of spacetime behaves exactly the same way in both cases, in the center. And also the masses of the black holes are very different. So the curvature, amount of curvature is different, but still it behaves in the same way. So this is again very, very fascinating. There have been many evidences in support of Einstein's general theory of relativity, and this is just one more, which is true, but it is still very satisfying that it is all coming together so consistently. How it will change the astronomy for us, how it will change the astronomy for the people who are astronomy enthusiasts, first of all, for them, for you people who are doing astronomy for the living, who have given their lives to astronomy, and for the newcomers who are going to join you for the research in supermassive black holes and these kind of things. So how it is going to change for this picture is going to change the astronomy for the next generation. I don't know if it will change anything as such. Maybe one thing it does is it shows the value of collaborative research, and it really, really demonstrates that science is a collective activity of all of humanity. And we are looking at things which is part of our common heritage as a human race. And we are also able to look at it through a collective endeavor. So, my hope is that this will sort of reduce the very intense competition that there is in science today. Maybe it will encourage the science enterprise to be more collaborative, more friendly, more open, not needing to be indulging in cutthroat competition all the time in order to move ahead, in order to push the frontiers of knowledge, because after all, it is our common heritage. Technically, how to change? It is an affirmation that whatever technology was used for this is along the right lines. And as you perhaps already, perhaps others have discussed, the Event Horizon Telescope image of Messier 87 using this very, very special technique of interferometry, which means that you have to point two different telescopes at the same point in the sky, and you have to measure the small differences that both the telescopes simultaneously see. And whatever both telescopes see at the same time, and then you extend that to all the different telescopes. So it's about not adding what this telescope saw to what this telescope saw, but taking the combination of each pair of telescopes and then putting it all together. And that's the reason why it took ever so long, because it's a very, very complicated computational process to do this whole thing. So that technology has really reached its limits, and it is really at the cutting edge. And using that technology is how this result came about. But there is still a long way to go. Even with the result, even with the data that they already had, they used only a very small part of the data that they had on the center of the Milky Way, because it was this very, very difficult process, much more difficult than the process in the case of Messier 87. And perhaps reasons for that were discussed already, why there was this difference to do with the difference in the size of the black hole and the distance and so on. And so we are on the right path. It is very, very encouraging to and very, very affirming, so that the same observations but with better capabilities can be repeated.
so that we can get much more detail about this dark heart of our cosmic home. And we can also perhaps see how things are changing around it. With the same techniques, but with better data, with data taken during good weather conditions, and so on, and more data, we can probably get a much more interesting story about what happens at the center of the Milky Way. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर प्रज्वल ने आपको बताई, होपफुली आप लोगों को इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी और पिछले इंटरव्यू में आप लोगों ने ये बात भर-भर के बताई थी कि भाई डॉक्टर प्रज्वल जो है वो समझाती बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं समझा दी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जानना बाकी है। आगे आते धीरे-धीरे आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे। अब आते हैं डॉक्टर कौशिक पे। डॉक्टर कौशिक जो एक मेंबर रह चुके हैं इस प्रोजेक्ट के और इस प्रोजेक्ट में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जो है वो हम लोगों को काफ़ी सारी बातें बताने वाले हैं और फ्यूचर में हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, उसके बारे में हमको बताने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर कौशिक का। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ये एक रात में जैसे फोटो खींचा और बस अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे जैसे हम लोग करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इट लाइक दैट कि ये खींचा और बस डाल दिया। सो प्लीज टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू गाइस हैव टेकन कि डेटा जो है उसको प्रोसेस करने में, उसकी मॉडलिंग करने में, जैसा कि आपने बताया कि आप और मॉडल्स भी बनाते हैं ब्लैक होल्स के, वो सब काम करने में कितना टाइम गया, और ब्लैक होल की जो इमेजेस हैं वो एक तो 2019 में M87 की खींची गई थी और अभी अपने सेजिटेरियस की खींची गई है। सो ये जो टाइम का गैप था ये क्यों आया, और इसके बीच में मतलब ऐसा क्या चल रहा था कि हमने उस ब्लैक होल की इमेज जो है वो ले ली, बट हमारे वाले ब्लैक होल की इमेज के लिए हमको टाइम लगा। राइट, ओके। सो फर्स्ट काफी वो सारे सवाल मैंने एक पिक्चर बार में वाला पूछ लिए। हाँ, तो एक एक करके मैं जाता हूँ। तो पहला ये है कि जो आप कैमरे से जो आप फोटो खींचते हो ना, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो इंटरफेरोमेट्री। वहाँ पे हम डायरेक्टली फोटो नहीं खींचते, पर हम फूरियर स्पेस पे विजिबिलिटीज मेजर करते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब I would request here जैसे you to can you please explain a bit about the Fourier space, because we have been listening about the Fourier space for a very long time जब से image आई है. So people would like to know that what is Fourier space. So if you can explain that for the audience. राइट, हाँ वो करता हूँ। सो आप एक हाँ, आप एक कोई साइन वेव वगैरह कुछ ले लो, ठीक है। इट इज मूविंग इन टाइम एंड लेट्स से इट्स मूविंग इन स्पेस। नाउ if you try to if you want to understand how is it moving in time and space, you do a conversion which is known as a Fourier conversion. It's basically trying to take this wave function as a function of time to a function of space, ठीक है, so that आप spatial components को capture कर सकते हो। So for example, आपको पता होगा कि इवेंट हॉराइजन जो ब्लैक होल पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए we needed an earth sized telescope, but that's not physically possible, right? So हम क्या कर सकते हैं, in interferometry you can join telescopes together and then form, let's say आप एक telescope इधर है, एक telescope उधर है, एक telescope इधर है, so you join this one with that one, like यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग हुआ, यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग हुआ, यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग हुआ। तो ये जो डिस्टेंसेस है ना, ये आपको स्पेशियल कंपोनेंट्स देते हैं, एंड प्लस इट्स कैप्चरिंग some image information. So that's why we are using Fourier space, so that you can join all of these different
distances together to form an Earth-sized black hole. And जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में क्या होता है कि आप फोटॉन्स आ रहा है, आप कैप्चर कर लो, यू फॉर्म द पिक्चर देयर एंड दैट्स द पिक्चर. जैसे हबल टेलीस्कोप से जो फोटोज आता है वो वैसा होता है. यहाँ पे द अमाउंट ऑफ फोटॉन्स जो आते हैं इतना कम होते हैं दैट यू नीड टू कंबाइन. एंड सो यूजुअली क्या होता है कि जो जो बहुत बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं दे आर यूजुअली कॉल्ड एरेज. जैसे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स साइड बाय साइड है काफी. और वहां पे भी जो डिस्टेंस की बात की ना मैंने, तो ये डिस्टेंस का मेजरमेंट कर करके वहां पे इमेज फॉर्म होता है. That's basically what it is. That it gives you spatial information and temporal information, and then you have to take that information and convert it back to an actual image. Even though you're missing some of these spatial distances, so you need to fill up using some of your models. Basically joining the information you are creating a picture. So Exactly. okay, so let's come back to the previous question कि कितना समय जो हमको लगा है और डेटा कब था हमारे पास, कौन से डेटा को हमने प्रोसेस किया है कि हमें ये जो इमेज है वो देखने को मिली, और ये जो गैप था M87 की पिक्चर में और सेजिटेरियस की पिक्चर में, ये गैप क्यों था, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे. Right. So पहला जो ऑब्जर्वेशंस पब्लिश्ड हुआ वो 2017 में लिया गया था. एंड उसके बाद भी हम 2018, 2021, 2022 में ऑब्जर्व कर चुके हैं. उसका डेटा प्रोसेसिंग चल रहा है अभी. सो M87 स्टार का क्यों पहले हुआ था, क्योंकि आप ये देखो M87 स्टार का ब्लैक होल मास है और ब्लैक होल टोटल वेट जो है that's around 6 times 10 to the power 9, or 6 billion solar masses, so times the mass of the sun. Sagittarius S star का है around 1000 or 1500 times lower, which is around like 4 times 10 to the power 6, 4 million solar masses. So while both are supermassive black holes at the center of galaxies, time, like a ray of light takes a longer time to go around M87 as opposed to a Sagittarius star. So things are more variable. Like the gas, आपको black hole है, black hole के around gas move कर रहे, right? So given the size of, if the black hole size is smaller, then gas can move around faster, right? Around the black hole. Now, अगर if the source is more variable, the gas is more variable, then आपको स्टील पिक्चर लेने में बहुत मुश्किल होगा ना. क्योंकि आप ये सोचो कि एक बंदा पैदल चल रहा है, उसका फोटो लेना बहुत इजी है. जो M7 है जो स्लोली इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम, और आपको एवरी नाइट आप ऑब्जर्वेशन लेके वो चेंज नहीं होगा उतना. और फिर आप एक बंदा जा रहा है सुपर बाइक में, उसका ब्लर्ड इमेज आएगा ना, तो प्रोसेस करना उसको मोर डिफिकल्ट भी है. तो इसीलिए ही हम इमेजिनेशन को पहले प्रोसेस करके उसका that was easier to describe considerably than Sagittarius star, where because it's faster doing the averaging over a single night, that took out a lot of the information, and it provided us with a blurred image. That's why. इसीलिए थोड़ा लेट हो गया था. इसीलिए लेट हो गया. So what is the next expectation? Like what can we expect the next? What is the next project? Are we going to like, अभी अर्थ को हमने एक टेलीस्कोप बनाया है, क्या अर्थ के ऑर्बिट को एक टेलीस्कोप बनाने का कोई प्लान चल रहा है, या फिर पूरे सोलर सिस्टम को एक टेलीस्कोप बनाने का कोई प्लान, क्या कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर अगला आपका प्लान है क्या एग्जैक्ट? तो एक तो अभी जो ऑलरेडी in motion है plan is adding more and more telescopes to the
Event Horizon Telescope set. In 2017 we had 8 telescopes. I think we added one more in 2018, and then two more at least in two more telescopes in 2022, like this year, and maybe also 2021. Don't exactly remember. So एक तो वहाँ पे काम चल रहा है कि you add in more and more radio telescopes around the world to make your image a bit more sharper. तो फूरियर स्पेस हम फील करने की बात कर रहे थे ना, जो हमको ये डिस्टेंस वाला सीन, तो ये as you add more and more telescopes, you get more and more of these distances, the connections between different telescopes, and that helps you to make a sharper image. तो वो तो एक है ही। एक है अभी जो फॉर्मेशन चल रहा है नेक्स्ट जनरेशन इवेंट हाउसिंग टेलीस्कोप का, वहाँ पे you add in like almost 10 more telescopes, 10 to 13 more telescopes, and that will give you very lot of different benefits. One, it will create a sharper image, sharper with respect to like what we have now. Number two, it will try to join the आप देखे जो आप ब्लैक होल देखे थे, that's like really close to the black hole. और एमआईटी से हमको पता है कि there is a jet there, right? So the objective will be to take the region around the black hole and also capture the jet together, so that we figure out what's going on near the black hole and then how is it translating to the jet. ये तो एक example हुआ, and then there are so many other black holes that are worth observing, even though we can't see like horizon, like black hole shadow तो नहीं देख सकते, but at least jets वगैरह ये study कर सकते हैं. Right, and after that जो अभी concept study चल रहा है is, like you said, is putting a telescope in space, so that, or on the moon or something. Like we are testing out different models where you take a telescope and like chuck it into space somewhere, either in near Earth orbit, far Earth orbit, or near to the moon, or even closer to, like even further than that, and then see what the benefits of that are. Like if you have very very long wavelengths, then you can resolve smaller spatial scales, तो उसके मतलब वही इमेज शार्पर हो जाएगा. पर वही कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगा वो काफी तगड़ा होगा, let's say. And the amount already data transfer to total data stored होता है, that's like of the order of petabyte scale. और तब क्या होगा मुझे पता, अंदाजा भी नहीं है कि तब क्या होगा exactly, और कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे, पर ये सब चीज अभी चल रहा है, ongoing discussions and all. तो ये थे डॉक्टर कौशिक, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमको सारी चीज़ें समझाई, सब चीज़ें बताई कि किस तरह से ब्लैक होल की इमेज जो है वो ली गई है, उनका क्या काम था, और अंत में उन्होंने ये बताया कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ पूरी बातचीत जो है वो रोजेंडर टॉक्स पर अभी बहुत ही जल्द आने वाली है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप भी ये बताइए कि क्या नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। जो ब्लैक होल की अभी इमेज आई है उसके बाद आप क्या नेक्स्ट जो है वो इमेजिन कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्या आ सकता है। अपनी इमेजिनेशन को खोलो यार, और बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम रोजेंडर।